Northern Arc Capital Limited, a Chennai-based NBFC, and here is what I think which makes them unique. So they have two revenue drivers. Engine one, direct lending. So they lend to retail customers as well as small businesses. And ये lend करते हैं agriculture finance, MSME finance और जितने भी छोटे छोटे NBFCs हैं सारों को. And for this segment, their AUM is roughly around 6,900 crores, 6,800 crores. And ये business इनका 40% year on year grow कर रहा है. Second driver is they act as a credit intermediary between roughly around 360 or 370 odd NBFCs and SFBs and 400 institutional investors. So यहाँ पे ये fee income के through earn करते हैं with practically zero capital deployed. अब समझते हैं इस कंपनी के कोर थीसिस के बारे में on why this business excites us. First, the D2C mix. So in FY21 इनका D2C का share of the entire AUM was roughly around 19%, and this number has grown to 59% by FY26 end. And on top of this, management is also guiding that this number will go up to 70% by end of FY28. अब now the thing is कि why this excites us. सो द पॉइंट इज कि जैसे जैसे D2C का मिक्स बढ़ते जाता है ये मार्जिन को इम्प्रूव कर रहा है नॉर्दर्न आर्क के टू गेट टू मोर पैट एंड एबिटा. सो बेसिकली जैसे जैसे ये ग्रो करेगा उनका एक्सपेंशन NIM का नेट इंटरेस्ट मार्जिन का होता जाएगा. सेकंड, इनका जो फी इनकम जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, फी इनकम रफली अराउंड इट वाज 70 करोड़ इन FY26 and management is saying that will reach around 150 crores by end of FY28 and this will directly go into their valuations, so which again is a very good thing. अब बात करते हैं इनके मिस प्राइसिंग के बारे में. So the company was IPO'd in September 2024 and they raised around 900 crores of equity, and what happened because of that was कि इनका ROE जो roughly around 14% at that point in time came down to 9.4 9.5% because they raised fresh equity, income उतना ही रह गया तो ROE में dip आ गया. अब now the market saw it as just another NBFC क्योंकि 9.4% का ROE था, and because of that they started to trade around their book value. So even now they are trading at around 1.1 or 1.2 times their book value. So इसमें अब the catalyst or trigger point is कि जो Q4 FY26 का exit ROE है that is around 14% and management is guiding in due course of next 8 quarters this number will go even up, और वो टारगेट कर रहे हैं मिड टीन्स विच विल बी अराउंड 15-16%, जो कि इज एज गुड एज देयर एनी अदर पीयर्स जो कि रफली अराउंड 2 और 3 टाइम्स मल्टीपल पे टू देयर बुक वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं. सो देयर इज क्लियरली अ मिस प्राइसिंग एंड गैप. कंपनी को री रेट किया जा सकता है ऑन मल्टीपल्स बेसिस. अब इनके नंबर्स के बारे में समझते हैं. सो इनका FY26 का बुक वैल्यू वॉज अराउंड 240 एंड नेक्स्ट 2 years के लिए जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि दे विल कंटिन्यू टू ग्रो देयर AUM एट 20 to 25% का ब्रैकेट. सो इवन इफ वी डोंट टेक एनी ऑपरेटिंग लेवरेज एंड सिंपली सी कि अगर उनका EPS जो FY26 का था दैट वाज अराउंड 25 रुपीज और वो अगर 20% नेक्स्ट ईयर ग्रो करता है फॉर FY27 तो ये आएगा 30 रुपीज के अराउंड. And FY28 में if they continue to grow again at 20% that comes around 36-37 rupees. So cumulative EPS जो FY27 और 28 का हुआ that comes around to 30 and around 37-38. So roughly to make our maths easy 70 ले लेते हैं, and if we add this number to FY26 का book value it comes to around 310. and we also discussed कि ROE इनका better होगा तो re-rating की possibility है, और अगर 310 का इनका बुक वैल्यू हो जाता है बाय एंड ऑफ FY28 एंड देयर market re-rates this company to 1.5 times or 2 times their book value, so their share price should be around 450 to 600, right? So there is clearly a mispricing for this stock, but it delivers primarily, it depends primarily on two things which the management delivers. First, on improving the ROI and hence only the market will reward, and second, the earnings growth which should be around 20 to 25% for year on year for next 2 years. So this was all about Northern Arc, and happy to discuss anything about Northern Arc in the comments, and see you in the next video.